it's fine, but we wish we had a well. So, yes, I think a fundamental point of policy and rights and intellectualism when it comes into these areas is talk to the people who are affected, ask, and build channels of speech, of feedback. Behind you, your academic abilities. I did history honors, which is still a mystery, but that's okay. So yeah, I just wanted you to know, this is really an observation, and I will make it short so we don't hold up everybody. About 21 years ago or 22 years ago, you were at the Nehru Center in London, and I was there. And you had actually given a talk about all kinds of things, wonderful stuff. And the one thing that I remember you speaking about was when you were in college, you went to interview the Prime Minister, Indira Gandhi. And you said you were about to head out to the college and you had a chola and you had a tape recorder with 11 of the buttons on it. I'm afraid with the chola and tape recorder. And no one checked it. Yes. And your friend also dropped by and you asked him to join you to interview the Prime Minister. And you went in, they didn't even actually check your bag to see what you were carrying. And nowadays, they check you even if you don't have anything. So I was really thinking about those wonderful days that you talked about. The youngsters here would not know very much about it because you were born with all this ye dikhao, wo dikhao, you know. That is a true story. It's got nothing to do with Ambedkar particularly, but it's a great story because I still remember vividly going to Parliament House because having come back as an MP and seeing all the security and the gates and the checks and the passes and the values. It was such a different world back in 1975 when I interviewed Mrs. Gandhi. You could walk in, anyone would walk in, you asked for directions, the security cheerfully pointed out the Prime Minister's office. I went there was kind of a cheerful shambles raining, as all sorts of people walking in and out. And the private secretary was, I remember, quite openly cracking jokes about the movie Gandhi, which had an actress playing someone who resembled the Prime Minister. And then when the information advisor stuck his head out to the Prime Minister's office and called my name, I said, do you mind if my friend joins me? And he said, why not? And so my friend with his chola and his tape recorder came in, and at no point had anyone ever checked that chola, which could have been carrying anything but a tape recorder, but it wasn't, you know, that's how we did. So I still have a photograph of that extraordinary occasion. But those days are long gone, sadly. And when you think that the very same Prime Minister whom I'd had that encounter with was assassinated 9 years later, you know, it's really an indication of how much the odds have changed against ever returning to that kind of innocence. Sir, you had a question. It could be you have to wrap up. I'm getting serious. Yeah, a very broad question on Ambedkar, sir, to the panel in broad nature. What do you think about the idea of Ambedkar at the later age of his life when he said that we should all convert to Buddhism? A person of the intellect and ability of Ambedkar proposing to get out of the psychological, social and political religious dimensions of the religion, or whatever you may call loosely Hinduism, to get into another religion, if it may be called so. So what are the natures of that transition? What is the logical end of that transition if we as a subcontinent make it? Are we a Buddhist country in the idealistic idea of Ambedkar? Like 50 years from now, 100 years from now? Ambedkar has mentioned his desire to convert in 1936 Jatpat Todak Mandal speech that annihilation of caste. By the way, academics may be aware that the word annihilation is used in the entire discourse on caste system, first and the last time only by Ambedkar. Because there is no way to reform the caste. Reforming caste is absolutely adjusting and compromising with caste. Caste needs to be destroyed as entity. And there in fact, that was one of the points which absolutely. And that is what the next time when Gandhiji wrote in Harijan, what he wrote, Ambedkar is challenge to Hinduism. And also he has written that Ambedkar would be the last person to allow himself to be forgotten. This is the only bad comment or rather harsh comment Gandhiji has used against Ambedkar, otherwise he never. The question is, after 1935 Eola conference, where he said that I
though I am born Hindu, I shall die not Hindu. 21 years Ambedkar waited for Hindus taking reforms in the Hindu social order. Ambedkar's followers unfortunately misunderstand that Ambedkar was against Brahmins. It was not the case. Ambedkar was against Brahminism. It's an attitude, and that attitude of monopolizing the entire power. I don't want to go into the logistics now. I have got the entire statistics on my computer. There are 4% Brahmins in the country today, right from judiciary till 600 collectors, till vice chancellors of 600 universities, till top-ranking policemen, till your all defense forces, how everything, even NGOs, even in corruption for that matter, they are numerically larger. Because they wanted to mention Dr. Ambedkar envisaged the present situation where each state in India which is ruled by a political party, state party, is now concentrating power in family. Each one is developing an entire system so that it's father to son. All these He's written on the problems of linguistic states, but he didn't anticipate family inheritance, I must say. As somebody who was never very convinced by the logic of the caste system, he would not have accepted the inheritance principle anyway in politics or in anything else. So I can tell you that though he has not written about it, I think it's a fairly safe assumption that he would have disapproved and would have been quite critical of the idea that political leadership should go through inheritance rather than through election or other form of merit. But this is, surmise. He has not written about this and far-reaching as well, which I would recommend you look at. But let me thank once again our wonderful panel. They've been very patient. Thank you, Aleph Book, thank you, Karuna Nandy, thank you, Bhalchandra, Mungekar, and thank you all in the audience. I do want to single out my researcher, Katie Abraham, who's sitting here, who plowed through a lot of the work that I found useful to incorporate in the book of Ambedkar and life. Thank you all very much, and back to you. सर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, जिस तरह से ये अम्बेडकर के ऊपर बहुत सी बुकें लिखी जाती हैं, उनकी लाइफ को लेके बहुत से लोग हैं जो अपनी बुक लिखते हैं, सर जी ने भी लिखी है। तो सर जी, मतलब आम जनता के लिए क्या इसमें कोई आसान तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया है, या किस तरह की इसमें विचारधारा है जो हमारी रूरल एरिया में जो जनता रहती है, जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का मालूम भी नहीं है कई जगहों में कि संविधान क्या है हमारा। तो सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? लोगों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है एक देश की सबसे बड़ी अमानत है, इसलिए कि भारत की जो पूरी जो समाज व्यवस्था है उनमें ये संविधान तैयार करने के पहले एक समता है, बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है। ये चीज़ें भारत के इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलती। ये चीज़ें पहली बार ये जो मूल्य व्यवस्था है वो संविधान में लाई गई, जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता जो है, छुआछूत, उसको बंदी लगाई। हर एक इंसान को, यानी चाहे औरत हो या आदमी हो, जेंट हो, सब लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। किसी भी गए 700 बरस के डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसा कोई भी देश नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका लेकर भी, कि जहाँ सब आदमी को 21 बरस के ऊपर राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। अभी तो 18 बरस तक आया है। दूसरी बात यह है कि महिला और पुरुष ये दोनों में जो विषमताएँ है, जो वो विषमताएँ नष्ट करने की, एबोलिश करने की पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में की गई है। देश की एकता, अखंडता और यूनिटी रखने की हर एक आदमी की, हर एक इंसान की, हर एक सिटीजन की, नागरिक की जिम्मेदारी है, और ये संविधान में कहा गया है। और देश की जो आर्थिक प्रगति होगी वो आर्थिक प्रगति भी गरीब लोगों तक, खास करके देहात में, गांव में। गांधी जी कहते थे कि भारत है गाँवों का देश है। 5 लाख गांव भारत में है।
इसमें गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, लेकिन सब लोगों को इकट्ठा लेकर ये देश हमें निर्माण करना चाहिए। ये जो संकल्प है, ये संकल्प भारतीय संविधान में है। राजकीय पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ देश में, उन सब पार्टियों ने ये गलती की कि संविधान हमें आज़ादी मिलने के बाद संविधान जिस तरह से लोगों तक लेके जाना चाहिए था वो हम गए नहीं, और इस वास्ते लोगों को अपने अधिकार क्या है ये भी अभी तक मालूम नहीं है। तो यदि लोगों के पास हम संविधान का सच क्या, असली मसला क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें क्या अरेंजमेंट की गई है, उसमें दलित, आदिवासी, किसान, पिछड़ा वर्ग, खास करके कामगार, मजदूर, इनके क्या अधिकार है, ये अधिकार जब तक हम लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात यह है कि आर्थिक प्रगति उनकी कैसे होनी चाहिए, इसका भी एक प्रोग्राम संविधान में दिया है। और दूसरी तरफ जब लोगों को एक आर्थिक प्रगति में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा तब लोगों ने क्या करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन संविधान में किया गया है। तो मैं समझता हूँ भारतीय संविधान पूरे भारतीय जनता की एक सबसे बड़ी एक अमानत है, उसका संरक्षण करना ये हमारी सबसे जिम्मेदारी है। और ये बातों की जिक्र एक किताब में जो डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है, अम्बेडकर बायोग्राफी, और जो मैंने लिखा है द एसेंशियल अम्बेडकर, दोनों में ये बातें कि हमने जिक्र किए। हमारा देश सर 75वीं वर्षगांठ मना चुका है और हम 100वीं वर्षगांठ जब मनाएंगे तो 100वीं वर्षगांठ में तो किस तरह से जो आम जनता है उनको संविधान के बारे में पूरा नॉलेज होगा और जो बेसिक उनकी नीड है एजुकेशन से लेके तो ये सारी चीज़ें उनको मिल पाएंगी सर जी? तो बात तो यही कि जिस तरह की लोगों की आकांक्षाएं थी आज़ादी मिलने के बाद, उसमें से कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश हो गई, लेकिन लोगों का ये सपना था कि जिस हद तक ये आकांक्षाएं पूरी हो गई उससे ज़्यादा हद तक ये आकांक्षाएं पूरी होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देश में जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा हक, ज़्यादा फ़ायदा इस देश में पहले से जो अमीर है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और जो गरीब है उनको न सिर्फ फ़ायदा ही न मिल रहा है लेकिन गरीब ज़्यादा होते जा रहे हैं। बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी समस्या गांव में है और वो शहरों में भी है, और बेसिक सुविधाएं जो है वो सुविधाएं आज तक लोगों को जिस हद तक मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिले। तो अभी लोगों का सपना पूरा करने के लिए, यानी केंद्र सरकार हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों पर ज़्यादा ध्यान होकर उनकी बेरोजगारी निपटना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, एजुकेशन देना, बेसिक नीड है, ये हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों का निजीकरण इतना हो रहा है कि इस देश के गरीब लोगों को शिक्षा पाना बहुत मुश्किल होगा। और कि कोई भी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल जो सार्वजनिक हॉस्पिटल जो है पब्लिक हॉस्पिटल, उसमें हमेशा 70 हज़ार लोग जाते हैं और टीचर जैसे, और दूसरी तरफ 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल। तो भारत जैसे गरीब लोगों के देश में इतना संपत्ति का बंटवारा श्रीमंत लोगों के पास, अमीर लोगों के पास जाना, ये एक संविधान को बड़ा खतरा है। और राज्य करते लोग जो है, कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक गरीब लोगों की जो आकांक्षा है वो पूरी करने की कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने आम जनता को बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। हिस्ट्री एंड जोग्राफी, ओके, वो थिंग्स आर geography it's a wonderful subject, and you are well versed in, of course, history different thing, but one of the professors of geography. जी सर जी, एक्सीलेंस, थैंक यू, लॉट्स ऑफ